Hello everyone, welcome to this class. आज आम यही क्लास रे ओडिशा पुलिस एसआई पाई जीके रो 100 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करबा। ठीक अछि, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रहिछि, ट्राई करबा। आपण यार पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे छिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे। आरंभ करबा क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई करंतु। Laterite soil is found in which of the following states? केउ राज्य रे आपण laterite soil देखिबा पई पाइबे। laterite soil आपनकर ऑप्शन 4 समस्त चूज करछन्ती। कर्नाटक एंड तमिलनाडु रे laterite soil देखिबा पई पाइबा। ओके, laterite soil लेस फर्टाइल रहउची बिकॉज़ एथरे आपनकर नाइट्रोजन कम रहबो। ओके, एंड laterite soil रो जदि हमें रंग विषय रे कथा हबा, दैट इज रेडिश कलर रहइबो बिकॉज़ ऑफ एथरे आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड रहछि। बुझियला, सो ऑप्शन 4 हिजबो। एंड हम ओडिसा रे मध्य ओडिसा रो जो हिल एरिया रहछि से हिल एरिया रे मध्य आपण लैटेराइट सॉइल देखिबा पई पाइबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोजेक्ट स्कीम? निम्नलिखित मध्यरु केउटा प्रथम बायोस्फीयर प्रोजेक्ट स्कीम अटे? ट्राई करंतु। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रोजेक्ट स्कीम नीलगिरीस बायोस्फीयर रिजर्व हिजबो। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नीलगिरीस बायोस्फीयर रिजर्व मन रखंतु। नेक्स्ट, द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया इज हिजबो इंदिरा पॉइंट इन निकोबर आइलैंड। ऑप्शन 3 इंदिरा पॉइंट मन रखंतु। इंदिरा पॉइंट एहा पूर्वरु एटा थिला पिगमेलियन पॉइंट थिला, बट 1984 रे जते बेले इंदिरा गांधी से जगह को विजिट करथिले, देन आफ्टर एटा को इंदिरा पॉइंट नाम रे नामित करा दैथिला। इंदिरा पॉइंट बिकॉज़ ऑफ इंदिरा गांधी कर जो विजिट थिला 1984 रे। द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट हबो। एंड जदि आसीबो इंडियन मेनलैंड रो, दैट इज कन्याकुमारी, जाहाकू केप कमोरिन कुआ जाय। नेक्स्ट, फाइबर क्रॉप्स आर कोन हे परिबो कोंतु। फाइबर क्रॉप्स आर इतरे कोन कोन आसीबो फाइबर क्रॉप्स रे? ट्राई करिबा। फाइबर क्रॉप्स रे कोन कोन आसीबो? कॉटन आसीबो, हेम्प आसीबो, ज्यूट आसीबो एंड मेस्टा आसीबो। ओके, तो ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मींस व्हाट कोंतु। जनसंख्या रो वृद्धि, जनसंख्या रो वृद्धि रो हार कोन? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मींस द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स। ऑप्शन 4 is your right answer. Next question कहूची मिक्स्ड फार्मिंग मींस व्हाट कोंतु। मिक्स्ड फार्मिंग माने कोन हबो? मिक्स्ड फार्मिंग माने कोन? मिक्स्ड फार्मिंग माने क्रॉप कल्टीवेशन सहित लाइफ स्टॉक को हमें कंसीडर करिबा, दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। तो ऑप्शंस अनुसार केउटा हिजबो? रियरिंग ऑफ कैटल एंड एग्रीकल्चर। ऑप्शन 4 is your right answer, that is your mixed farming को हजिबो। नेक्स्ट, गुरु शिखर कोन हाईएस्ट पीक अटे कहारो? आरावली रेंज रो आरावली सोइजबो। ऑप्शन 4 गुरु शिखर हेउची हाईएस्ट पीक ऑफ द आरावलीस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ट्राई करंतु। निम्नलिखित मध्यरु केउ स्टेटमेंट टी ठीक अछि? निम्नलिखित मध्यरु केउ स्टेटमेंट आपनकर ठीक अछि? महादेव हिल्स विषय को जाइछि। महादेव हिल्स आपनकर मध्य प्रदेश सातपुरा रेंज रो पार्ट रे आसी जिवो। सो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। महादेव हिल्स आर इन द वेस्ट ऑफ मैकल हिल्स। ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, द साउदर्न ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इन निकोबर आइलैंड हे जिवो। ऑप्शन 3 is your right answer. Next question, which one of the following pair is correctly matched? Try करंतु। निम्नलिखित मध्यरु केउ पेयर टी करेक्टली मैच अछि?
टुलबुल प्रोजेक्ट रही जम्मू एंड काश्मीर एटा भूल अछि देन श्री साईलाम प्रोजेक्ट रही आंध्र प्रदेश एटा आल्सो भूल अछि पापाना साम प्रोजेक्ट रही तमिलनाडु एटा आल्सो भूल अछि उकाई प्रोजेक्ट इज राइट आंसर उकाई प्रोजेक्ट रही गुजरात रो तापी नदी रे ए प्रोजेक्ट टी आपनकर जहा एक मल्टी पर्पज डैम प्रोजेक्ट अटे उकाई प्रोजेक्ट गुजरात रे रही ऑप्शन 4 एवर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through which of the following Indian states ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आमे जानि छथि 8टी राज्य देई पास करिछि 8टी भारतीय राज्य जरिया रे पास करिछि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देन देखंतु केउ ऑप्शन इज राइट आंसर ट्राई करिया देखंतु बिहार तो हबो नै ऑप्शन 1 रे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एठी महाराष्ट्र हबो नाही गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा एंड मिजोरम मध्य प्रदेश एठी आल्सो महाराष्ट्र असला महाराष्ट्र हबो नि ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर ओके 8टी राज्य देई पास करछि मन रखंतु आपनकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एवं राजस्थान आल्सो तो ऑप्शन 3 हिजबो आपनकर राइट आंसर नेक्स्ट Gujarat is the largest producer of salt in India because Gujarat अधिक परिमाण रे salt produce करूची काहेकि काहेकि गुजरात रो हाईएस्ट कोस्ट लाइन रही भारत रो ठीक अछि सबुठारु अधिक उपकूल अंचल को कवर करूची गुजरात जेमिति वर्ल्ड रो कनाडा सेमिति भारत रो गुजरात देन द्वितीय कथा होची यार जियोग्राफिकली मध्ये गुजरात को गोटे एडवांटेज मिलुची जे से कौन करिवो अधिक सॉल्ट प्रोड्यूस करबा पई बिकॉज़ प्रथम कथा हला यार कोस्ट लाइन एंड सॉल्ट को आपण प्रोड्यूस करि परिबे आपणकर जते बेले गोटे इवापोरेशन हार्वेस्टिंग ता सॉल्ट होची गोटे इवापोरेटिंग हार्वेस्टिंग ओके तो एथि पई कोन आर आइडियल कंडीशन होची लो रेनफॉल होतबा दरकार एवं टेंपरेचर अधिका रहबा दरकार so that गोटे एक्सटेंसिव ड्राई कोस्ट रहबा दरकार so it has extensive dry coast जो option 1 is your right answer next operation flood refers to कोन हबो कोंतु operation flood कोन हिजिवो operation flood होची increase in the production of milk जहा को व्हाइट रिवोल्यूशन को आजे कोन को आजे operation flood का सहित जडित अटे व्हाइट रिवोल्यूशन सहित जडित अटे 1970 मन रखंतु ओके एनडीडीबी द्वारा एटा करा जायतिला आपनकर एनडीडीबी नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 which of the following is not a cause of the low productivity in Indian agriculture निम्नोक्त मध्यरु केउटा गोटे लो प्रोडक्टिविटी रो कारण हबो नाही नाही कथा को जायछि कोऑपरेटिव फार्मिंग ही परिबो गोटे लो प्रोडक्टिविटी रो कारण हबो नाही बिकॉज़ एटा कलेक्टिवली आपनकर हो so option 1 is your right answer from origin to delta the brahmaputra traverse okay origin to delta पर्यंत ब्रह्मपुत्र कोन चाइना then India then Bangladesh option 3 is your right answer चूज करछन समस्त option 3 बहार राइट आंसर ओके तिब्बत चाइना रो तिब्बत रे याकू कोन कहै जाय यारलुंग सांगपो कहै जिवो ओके then India then Bangladesh next river Damodar is called sorrow of Bengal because काहे कहै जाय दामोदर नदी को sorrow of Bengal काहे कहै जाय because एथरे flood आसीबो that is option 1 gets flooded often causing havoc option 1 is your right answer next crop rotation is being adopted काहे करा जाय crop को रोटेट करिवार कारण होची प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइबा to increase the productivity of land option 1 have right answer okay crop को रोटेट करिवार कारण होची प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइबा पय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करंतु 82 longitude बट एटा आपनकर 82 डिग्री
30 minutes हवा कथा that is east तो इटा मे बी मिस्टेक अछि आपण एटा करंतु 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट longitude is geographically significant to India because एटा कोन डिटरमाइन करछि आपनकर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ऑप्शन 1 हेबो यार राइट आंसर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को दैट इज डिटरमाइन करे नेक्स्ट which one of the following is not correctly matched भिलाई स्टील प्लांट आपनकर छत्तीसगढ़ रे अछि ना तो एठी कोन अछि ऑप्शन 1 ही राइट एठी आपनकर भूल अछि राइट आंसर हे जिवो भिलाई स्टील प्लांट आपनकर छत्तीसगढ़ रे रहिछि बोकारो स्टील प्लांट बिहार रे रहिछि राउरकेला स्टील प्लांट ओडिसा रे रहिछि दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल रे रहिछि सो ऑप्शन 1 ही आपनकर भूल थिला नेक्स्ट in which of the following states can you find pink soil or laterite तो ऑप्शंस अनुसार कर्नाटक आसीबो किंतु पिंक कथा कहआ जाउची सो वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश कहि परिबा ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर नेक्स्ट which of the following industries are the major beneficiaries of Mumbai बंदर जो रहिची मेजर बेनिफिशियरी कोन हे परिबे कॉटन टेक्सटाइल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री काहे की देखंतु मुंबई पोर्ट रे कोन हुए अधिक कोन इंपोर्ट होची मुंबई पोर्ट रो पेट्रोलियम एंड केमिकल्स इंपोर्ट होची जहा आपनकर पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री पई हेल्पफुल हेबो एवं एठारू अधिक एक्सपोर्ट होची टेक्सटाइल जहा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पई हेल्पफुल अटे दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज राइट आंसर नेक्स्ट in which of the following grouping of states of India is rubber grown on a commercial scale in which of the following grouping of states rubber को grown करांती गोटे commercial scale रे ऑप्शन 2 केरल तमिलनाडु एवं कर्नाटक इज राइट आंसर नेक्स्ट द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन कुल्लू वैली आपण केउठारे देखिबा पई पाइबे लद्दाख एंड पीरपंजल मध्य ऑप्शन 1 है राइट आंसर ठीक अछि लद्दाख एंड पीरपंजल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशियन इज the deepest trench of the Indian Ocean is which option is your right answer option 4 is your right answer ठीक अछि option 4 नो बिकॉज़ कहिछि इंडियन ओशियन कथा कहआ जाउछि तो जाभा ट्रेंच हे परिबो ऑप्शन 4 नो ऑप्शन 1 जाभा ट्रेंच ओके जाभा ट्रेंच गोटे डीपेस्ट पॉइंट इंडियन ओशियन रो क्लियर नेक्स्ट इवा क्वेश्चन नंबर 25 the layer where the decrease in temperature with increase altitude is totally absent रहबो माने कोड जहा को कहआ जाउची टेम्परेचर रो इन्वर्जन होची दैट इज आपनकर स्ट्रेटोस्फियर ऑप्शन 3 हेबो यार राइट आंसर नेक्स्ट द कलर ऑफ लूमी सॉइल रो कलर केमिति दैट इज ब्लैकिश ब्राउन हबो ब्लैकिश ब्राउन ओके हाई ऑर्गेनिक मैटर्स देखिया पई पाइबा थिरे नेक्स्ट व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन हाई टाइड एंड निपा टाइड एट ए गिवन प्लेस हाई टाइड एंड निपा टाइड मध्य रे इंटरवल टा 12 hour 26 minutes option 2 is your right answer next seismic sea waves which approach the coast at a greater force arc रे एटा कहआ जिवो सुनामी कहआ जिवो underwater sea wave ta next in sea plants are restricted up to the depth of 200 meter option 2 is your right answer El Nino occurs over El Nino आपनकर that is Pacific Ocean रे एटा अंगरे El Nino फॉर्म हुए El Nino but a water current next conventional rainfall occurs in conventional rainfalls केउठार हो conventional rainfall that is आपनकर equatorial region रे हो equatorial region रे हबो because earth रो surface कोन हो एठी intense heating थाए that's why next land and sea bridges occurs due to that is convection is option 2 is your right answer next wind rose represents
wind rows represent कौन करिवो wind row माने जहाँ wind रो direction हला speed frequency तो आम गोटे turbine कहि परिबा और wind रो turbulence कहि परिबा ऑप्शन 1 है राइट आंसर नेक्स्ट the layer of atmosphere in which radio waves are reflected back is called atmosphere रो केउ लेयर रे रेडियो वेव्स कोन हबो रिफ्लेक्ट करिवो दैट इज आयोनोस्फियर माने रखंतु ऑप्शन 1 आयोनोस्फियर हबो ओके नेक्स्ट which one of the following is the greatest circle निम्नोक्त मध्यरु केउटा गोटिए greatest circle अटे that is equator हेउचे एक greatest circle अटे नेक्स्ट hanging valley is formed due to the action of hanging valley आपनकर फॉर्म हेउची due to the action of that is glacier option 1 है राइट आंसर समस्त चूज करछन्ती option 1 नेक्स्ट the मोहोरोविक और मोहो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करूची काहे को क्रॉस्ड एंड मेंटल को ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर क्रॉस्ड एंड मेंटल मन रखंतु the latitude of a place is expressed by its angular distance in relation to latitude angular distance करिवो इक्वेटर सहित ऑप्शन 1 is your right answer next the stagnant water at the bottom of a lake is called bottom of a lake कथा कुआ जाउची जो वाटर टा stagnant रहउची सेटा कोन कुआ जिवो ऑप्शन 4 is your right answer hypoliminion कुआ जिवो next willow for a cricket bat is obtained from willow जहा कोन क्रिकेट बैट तयारी हुए जोथिरे दैट इज डिसिडियस फॉरेस्ट रे आपण पाइबे willow next the longest river in Asia is Asia रो longest river होची river Yangtze option 2 is your right answer next sinkhole is phenomenon of that is which option is your right answer question number 42 sinkhole is a phenomenon of right answer कोन हबो आपण कमेंट सेक्शन रे जणाइ ओके प्लेन डेजर्ट टुंड्रा हबो ना कार्स्ट हबो माने रखंतु आंसर कहबी ना जणाइबे आपण ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर कार्स्ट इज योर राइट आंसर नेक्स्ट which planet in our solar system is nearly as big as the earth which planet in our solar system nearly as big as the earth that is आपनकर Venus option 3 Venus is your right answer next which of the following is called blue planet earth is earth option 2 is your right answer next when does the sun shine vertically on the equator रे vertically तो that is आपनकर twice a year is your right answer which of the following is the lowest atmospheric layer that is आपनकर troposphere then stratosphere is your right answer tsunami is the name given to which of the following tsunami गोटे under sea waves कहि परिबा option under sea waves हबो tsunami गोटे under sea waves हे परिबो next bamboo is classified as bamboo टा आपनकर ग्रास कैटेगरी रे आसी जिवो मन रखंतु ऑप्शन 2 ओके गोटे ग्रास रो कैटेगरी रे आसी जिवो bamboo ओके बिकॉज़ फास्ट ग्रोथ करिवो एंड एथरे आपण होलो स्टीम्स भी देखिबा पय पाइबे दैट्स व्हाई गोटे ग्रास कैटेगरी आसी जिवो tropical rainforest is characterized by tropical rainforest is characterized by tropical rainforest कोन हबो that is maximum biodiversity देखा जिवो option 3 is your right answer next natural source of air pollution कोन हबो कोंतु natural source of air pollution हे जिवो volcanic eruption ठीक अछि आग्नेय उद्गीरण volcanic eruption और यह व्यतीत आमे जदि कहबा आपनकर वाइल्ड फायर भी परिबो ठीक अछि वाइल्ड फायर एयर पोल्यूशन जे आपनकर वाइल्ड फायर हितला एंड अमेरिका रो लॉस एंजल्स आई थिंक ठीक अछि रिसेंट न्यूज रे थिला एंड रेडन गैस भी परिबो दैट इज गोटे
Next question number 51. Salination of soil is caused by excess irrigation. ठीक अछि excess irrigation कौन हबो soil रे accumulate हबो salt accumulate करियो. Next question number 52. Nipatites are कौन कहजिवो एटा weak tide कहजिवो. Nipatites टा होची आपनकर weak tide जेते बेले कौन हबो ना gravity less हबो earth moon and sun भितर 90 degree form हबो. Next, the ocean with the largest surface area is, that is आपनकर Pacific Ocean. Option 4 is your right answer. Next, the Mediterranean region are characterized by heavy rain in, that is winter rain. Option 1 is your right answer. An an artificial ecosystem is represented by निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक artificial ecosystem अटे. Aquarium टा ही परिबो. Option 4 होची गटे artificial ecosystem. Next, which is the most stable ecosystem? Most stable ecosystem होची ocean. Okay, because there are large size जो due to large size हम कहि परिबा. Which of the following exhibits unidirectional flow in a ecosystem रे? कोटा ही जो आपनकर energy. Option 2 is your right answer. Next, rubber plantation are found in, that is equatorial regions. Option 4 is your right answer. Tides are caused by the gravitational pull of the sun and moon on the earth. Option C. Next, condensation is the reverse process of vaporization. Option 1 have a right answer. Next, in atmosphere the lowest layer is, again asila troposphere. मन रखंतु lowest layer टा troposphere. Frontal rain is caused by, try करिवा frontal rain. It means कोन आपनकर जो warm air and cold air अछि, two air कोन हबो different temperature रे जतले meet करिवे सेतले frontal rain हबो. That is caused by cyclonic activity जोगु. Option 3 is your right answer. Smog is a combination of smoke and fog. Option 4 is your right answer. Next, the deposits of the ancient Tethys Sea were folded to form the Himalayas. Himalayas होची एक young fold mountain अटे. The tropical grasslands is called savanna कुहाजिबो. Option 3 is your right answer. Next, the main cause of recurring flood is, recurring flood टा कौन करिवो, that is soil erosion भी करेबो, deforestation भी हबो, ठीक अछि, silting of river beds भी परिबो. So all of the above is your right answer. Try करंतु. Moraines are formed in, that is glacial regions. Option 3 is your right answer. The Himalayas mountain range is an example of, Himalaya होची एक young fold mountain अटे. Option 4 is right answer. The area marked by internal drainage. The area marked by internal drainage टा आपण deserts रे देखिया पाई पाइबे. Option 3 is your right answer. Okay, clear? Next, why is South Pole colder than North Pole? Try करो. काहे कि आपनकर South Pole colder अटे North Pole अपेक्षा because of high altitude. High altitude हमें कहि परिबा. Next, the Himalayan mountain range is an example of, okay, again repeat अछि, fold mountain is your. Option 4, fold mountain is your right answer. This is the thinnest layer of earth. Earth ro thinnest layer होची crust. Option 3 is your right answer. Why the earth is having its own atmosphere? पृथ्वी रो काहे कि निजर गोटे वायुमंडल रहिछि, because पृथ्वी पाखरे कोन अछि, माध्याकर्षण बल अछि, ग्रेविटी अछि, ग्रेविटी. Next, the number of satellites of planet is Mercury. Mercury रो तो कोनसे भी नाही, 0 is your right answer. Which of the following does not belong to the solar system? Solar system. Solar system रे आपण देखंतु निबुला belong करिवो नाही. Okay, एटा space रो ही belong करिवो, solar system रो नो. Next, which of these is a, which of these is a, that is
dwarf planet. Okay, the dwarf planet Neptune, Titan, Eris. Eris is your right answer. Option B hobo here right answer. Eris. Next, what process takes place during the youthful stage of river? What process takes place above? Early deepening. Option 3 is your right answer. Next question. Rainfall caused by intense evaporation in equatorial area are called, that is conventional rainfall kuhajibo. Next question. Ultraviolet radiation stratosphere is absorbed by ozone. Okay, ozone is your right answer. Option 2 have a right answer. Next. Try करନ୍ତୁ question number 80. The gentle seaward sloping surface from the coast is called, which option is your right answer? Continental shelf kuhajibo. Option 1 is your right answer. Next question. Ring of fire is found commonly in ring of fire to rohichi Pacific Ocean. Important question parikha re asuchi apanakara. Next. The space retaining life in any form is called, that is biosphere. Biosphere is your right answer. Next. With what bioregion is the term steppe associated? Steppe ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ? That is grassland ସହିତ. Option 1 is your right answer. Next. Alluvial soil are rich soil for crop cultivation but are poor in nitrogen and humus. Poor ମାନେ ବହୁତ less ରହିଛି. Next. Great Barrier Reef, the world's largest coral reef, is located in, that is Australia. Option 2 Australia mane rakhantu. Next, the highest grade and best quality coal is, that is anthracite. Highest quality, highest grade and best quality ro koila da hoche anthracite. Next, the main source of unusable water on the earth da hoche, that is underground water. Underground water. Next, flash floats are associated with cyclonic storms kuhajibo. Option 2 have a right answer. Next try karantu question number 89. Tundras hochi gotiye cold desert ate. Cold desert ku tundras kuhajibo. Next, hydraulic action is a type of erosion caused by, that is running water. Option 1 have a right answer. Which of the following is the newest geographical era? Newest geographical era ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେଇପାରିବ? Option 3 କହିପାରିବା. Cretaceous. Option 3 ହେବ right answer. Next try କରନ୍ତୁ. Which amidst the following planet has its orbit closest to the sun? Which option ହେଇଯିବ? Mercury. Options ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତ options ଅନୁସାରେ Venus ହେଇଯିବ right answer. Okay. Next ଯିବା question number 93. The outermost layer of the sun is called corona. Very very important परीक्षा रे direct प्रश्न रहइबो आपनकर. The outermost layer of the sun, corona. Next, which planet is called evening star? Again आसीगला Venus होची आपनकर evening star. Next, light from the sun reaches us nearly. Options अनुसार करंतु. Options अनुसार 8 मिनिट ही हबो. Option 1 is the right answer. Next question. The disconnected lines drawn on a map for showing slope, सेटा कोन कहजिबो? Disconnected lines drawn on a map for showing slope, that is, which option is the right answer? Option 4 is the right answer. Okay, AQ कहजिबो. Next question. Which planet in our solar system is nearly as big as Earth? Again repeat achi, Venus. Option 3 is your right answer. Next question. Which of the following types of soil is best suited for cotton cultivation? Cotton cultivation by black soil mane rakhiba. Cotton cultivation black soil mane rakhantu.
द डीपेस्ट ओशियन इज डीपेस्ट ओशियन टा होची आपनकर पैसिफिक ओशियन देन आज लास्ट क्वेश्चन ट्राई करिवा two seas or water bodies connected by a narrow stretch of water is known as that is called strait option 2 have right answer तो यहाँ थिला 100 क्वेश्चंस आपनकर आउट ऑफ 100 फोर केते रहउची आपण कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे एवं आपण हेरो पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे आई होप ए क्लास टी आपण मन पे बहुत यूजफुल रहइबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास